It goes beyond traditional business model by combining innovation with a strong social mission to address pressing challenges, including poverty, unemployment, gender inequality, climate change, and limited access to healthcare and education. This session promises to be enriching as it brings down academia, industry, grassroots, leadership, and policy perspectives on a common platform. Let us first know our panelists and their contributions as a sustainable entrepreneur. I request my co-host to start the proceedings. Now let's have a look at the panelists. To begin with, we have Mr. Mallikarjun Litha, founder and CEO, Inclusive Divyangjan and Entrepreneur Association IDEA. Mr. Mallikarjun Litha is a seasoned serial social entrepreneur, trainer, mentor, and practitioner with over 27 years of experience dedicated to inclusive development and disability empowerment. As the founder of IDEA, he has worked extensively to build sustainable livelihood models for marginalized communities. He has strengthened institutions such as Saksham and JUNITE and has also served as an independent director at Javed Habib's. His work bridges grassroots initiatives with policy-level advocacy. May I please request the ID team to play a brief video about the respective organization? Movement for inclusive entrepreneurship takes a new digital leap. IDEA, the Inclusive Divyangjan Entrepreneur Association, proudly supports thousands of entrepreneurs with disabilities across the country. For the first time, their handcrafted, high-quality products will now reach every household in India. With just a click. Introducing the IDEA e-commerce platform, going live on ONDC, across all leading seller apps. This milestone is made possible with the partnership of DPWD, ONDC, Believe India, and Dhan, coming together to build a truly inclusive digital marketplace. Every product you buy supports an entrepreneur with disability, giving them visibility, value, and dignity through sustainable livelihoods. Your purchase is not just a product. It is a step toward an empowered and inclusive India. Shop now on ONDC. Support the creators. Celebrate inclusion. IDEA, empowering entrepreneurs with disabilities. May I please request Dr. Punita Goel to offer the sapling to our guest of honor. A round of applause, please. Thank you so much, sir, for joining. Going ahead, we have with us Mr. Praveen Nayak, founder, Garbage Clinic and Infratech. Mr. Praveen Nayak is widely recognized as one of India's leading experts in solid waste management and environmental sustainability. Often referred to as the Garbologist of India, he is the founder director of Garbage Clinic and Infratech Limited. He has served as a former member of the Central Pollution Control Board and has been part of national expert committees on waste management, contributing significantly to the policy and implementation frameworks. We are delighted to have Sir with us and request the IT team to please play the brief video of their respective organization.
May I please request Dr. Punita Goyal to offer sapling to Mr. Praveen Nayak. A big round of applause. We are honored to have you with us, Mr. Nayak. Thank you for joining. Next we have with us is Ms. Prerna Prasad, founder and CEO, EcoPlore and curator of One Bhoj. Ms. Prerna Prasad is the founder and CEO of EcoPlore, India's largest sustainable tourism company. She began her career as a journalist with leading news channels such as CNN, IBN, and India Today, before venturing into entrepreneurship. EcoPlore has been recognized by UNEP for fulfilling SDG 12. She is also the curator of One Bhoj, a sustainable mud house initiative in Delhi NCR, and a TEDx speaker promoting environmentally conscious living. We request the IT team to play the video of the respective organization. शहरों में पड़ रही हो भीषण गर्मी, प्रदूषण और शोर की मार, जब हम हो चुके हों प्रकृति और अपनी संस्कृति से कोसों दूर, ऐसे में कोई यदि आपका हाथ थामकर आपको ले चले उसी प्रकृति की गोद में, जहां सिर्फ सुहाना मौसम ही नहीं बल्कि एक शांति और ताजगी से भरपूर अनुभव कर रहा हो आपका इंतजार, जहां चिड़ियों की चहचहाहट और बहते झरनों का संगीत करे आपका स्वागत, और जहां ताजा स्वादिष्ट खाने की महक आपकी सोई हुई भूख जगा दे, तो शायद आप सोचेंगे किसी और लोक की बात हो रही होगी। और अगर हम आपसे कहें कि किसी और लोक या देश की नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष के कुछ छुपे हुए हीरो की बात कर रहे हैं, तो आप हैरान मत होइए। EcoPlore ने खोज निकाले हैं ऐसे ही कुछ नायाब हीरे, जो आपको न केवल अपने देश की प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति से अवगत कराते हैं, बल्कि इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि इस प्राकृतिक विविधता पर कोई आंच न आने पाए। साथ ही जो प्रकृति को सहेजते हुए इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि आपकी छुट्टियों के शानदार अनुभव में कोई खलल न आए। और आप इस सौंदर्य को कैसे अनुभव कर सकते हैं, जानने के लिए लॉग ऑन करें www.ecoplore.com। A big round of applause for Ms. Prerna Prasad. We would like to offer sapling to you, ma'am. Thank you, Ms. Prasad, for joining us today. Moving ahead, we have with us Samiksha Didi, in charge Tihar Jail, Chal Charkha. Samiksha Didi is a dedicated volunteer associated with Chal Charkha Women Training and Employment Center. With strong academic credentials, including BE, B.Ed, Gold Medalist, and M.Ed, she contributes significantly to women empowerment initiatives through education, skill development, and confidence building among rural and tribal women. Her grassroots efforts reflect deep commitment to social transformation. We request the IT team to play a brief video of the respective organization. आचार्य भगवन की प्रेरणा से संचालित चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्रों में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को हथकरघा, अंबर चरखा, कालीन व हस्तशिल्प कलाओं का निशुल्क प्रशिक्षण व रोजगार प्रदान किया जाता है। अल्प समय में महिलाएं प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनती हैं। हमारे सब लोग खुश रहते हैं जब से कमाने लगे, पहला तो हम कुछ भी नहीं करते थे। इन केंद्रों का उद्देश्य है कि कोई बेरोजगार न रहे, महिलाएं स्वावलंबी बने, प्रकृति सुरक्षित रहे, भारत की कलाएं समृद्ध हों और उनकी आभा दिगंत तक फैले। सर्व मंगल की भावनाओं के साथ यहाँ उत्पादित वस्तुएं आकर्षक, नित नवीन,
प्रकृति रक्षक हैं। इनमें भारत की गौरवशाली पारंपरिक कलाओं का दर्शन होता है। अतः आइए और सर्वे भवन्तु सुखिनः की Thank you so much. We would like to offer a sapling to Samiksha Didi, and we are truly grateful to Samiksha Didi and team for joining us today. A big round of applause, please. Now, in the end, it's my honor to introduce our moderator, come esteemed panelist for the session, Professor Dr. Debashri Mukherjee. Professor Mukherjee is a professor in the Department of Commerce and Business Studies at Jamia Millia Islamia, New Delhi, an alumnus of Visvabharati Shanti Niketan at Banasthali Vidyapith, Rajasthan. He has previously served as a full professor and head of the Department of Business Management at Tripura University for 2 consecutive terms. He is also the founding head of the Department of Tourism Administration and has been a member of Tripura University Court. He has established the first business incubator in the state of Tripura, fully funded by the Ministry of MSME, Government of India, and currently serves as the state coordinator of the AICTE sponsored student induction program for Tripura. Can we have, we would like to offer sapling, and we are truly grateful to you, Mukherjee sir, for joining us today. We hand over mic to Dr. Mukherjee because he's also the moderator of the session. So, sir, over to you. Thank you. Hello. A very good afternoon to all students, teachers, and my former and present colleagues sitting over here. It's really a privilege for me to be with the august company of the people you just have seen today and their contributions to the society. So as we move, let me just set the role because as a moderator, my duties and responsibilities entail upon me to first set the scope of what we are going to do and how we are going to do the proceedings. So we have our speakers, so I'm going to invite them to deliberate on their domain of their work, and then we will have some questions from my side once they complete. And as the choice of language is their own, so I leave it to the esteemed speakers, whichever way, whichever language they prefer to speak on, they are most welcome to do so. And then once the last speaker has kindly spoken, we'll have a central question that would be commencing on the particular theme. And then we'll open the house for you to ask your valuable questions, and you may ask as per the choice of yours who you want to direct the question. And that would be the program. And finally, once the last question is asked, we're going to wind it up the session. So this topic seems to be very, very interesting, social entrepreneurship, because so far the entrepreneurship as an idea, how we have talked, how we have spoken about, they primarily talk about making profit as an integral part of it. I hope some of you would agree, some of you would not. Now that connects me, because to set the ball rolling, I want to raise an important question, because that I keep talking with my scholars, that in 1970 there was a concept that popped up called Friedman Doctrine. So Milton Friedman, who was a Nobel laureate in 1970, he said that it is the social responsibility of the companies to make profit. So now from profit motive to switching to social capital, and how we are making this society a more inclusive one, and earning or making a society better for each individual to create a cohesive
mutual coexistence as an ecosystem, that's going to be a very integral part of our discussion today. And that's how we have named the session as Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship. So without much delay, the central question, because it's a very difficult to answer, I could not trust my memory for that, I wrote it down. So my question would be to you all, would be, because I request you to address it during your deliberation, that can entrepreneurship become a vehicle of systemic equity, where sustainability, profitability, and especially dignity coexist? So with this note, I'd like to introduce, invite our first speaker, Mr. Mallikarjun Letha. Sir, over to you. Thank you, sir. Good afternoon all. One professor and 4 students here. So, हम जो काम करते हैं, सोते हुए आत्माओं को जगाने का काम करते हैं. तो गलती से भी ये मत सोचिए कि मैं भूत प्रेत की बात कर रहा हूँ. मैं इस रूम में बैठे हुए हम सब की बात कर रहा हूँ. So when people used to say, this mission which we started in 2019, Malik, this is very good, but this is impossible. So we are looking for somebody who says that I will make it possible. So impossible को I am possible में बनाने वाला एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था हमें. वो एक social entrepreneur हो सकता है. So most of the problems in the world are created by us, our mind. So we are very good at problem analysis and finding out different solutions for a problem. But our problem understanding is a major problem in our country. इसलिए आज भी हम MBA करने के बाद या बिजनेस डिग्रीज करने के बाद नौकरियां ढूंढते हैं. But I thought, let me just before answer what sir asked about, I'm a person with 88% of disability. So you can say in other way, if I would have not done anything, I'm alive only 12%. So I ended up creating several social enterprises, part of fair trade movement, Swadeshi movement, so many things that we did. And we realized with 88% of disability, I can do it. There is no reason for people sitting in this room not thinking about it. So that is where we started. We took up a mission. Our mission is making India inclusive capital of the world. What does it mean? So there is an Australia, Canada and all Scandinavian countries together. हमारे देश में एक ऐसा population है, पूरा country जितना, एक उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा कम. That's a population of persons with disability, whom we always think they need a support, they can't do anything, so let us give them just a wheelchair or some pension. And over a period of time, our mindset, including the persons with disabilities mindset, has become such that, ठीक है, it's a government responsibility or parents' responsibility to take care of them. So we wanted to change that situation, not for them, but for the country. So when we say that Bharat has become 5 trillion economy, 8 trillion economy, 4th largest economy in the world, and in next 2 years we are going to be the 3rd one, विश्वगुरु जब बनेंगे तो उसको बनाने वाले कौन हैं? क्या वही 30, 40 अभी 120 हो गया लिस्ट में, अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट, वही भारत को इकोनॉमिक पावर बनाएंगे? And we all will be employees for them. So this is the question we asked for us, and we thought अगर इसका सही मायने में एक मूवमेंट खड़ा करनी है तो ऐसा एक वर्ग से खड़ा करने चाहिए जिसको हर कोई समझते कि कुछ भी नहीं कर सकते. So we ended up creating India's first incubation ecosystem for persons with disabilities during COVID time. And in the last 4.5 years, we have incubated 2,000 plus entrepreneurs with disabilities in 10 different states. And all of them last year, they did around about 175 crores of business. And their family incomes have doubled. The dignity part which has come out. Anybody who studies, who understands psychology of money, all these things which we are talking about is directly related to money. So if they can earn money, if they can bring money, if they can circulate money, they'll get respect, they'll get dignity, they can afford sustainability. So money is a core of it. So keeping that in mind, we created IDEA like CAI Chamber of Commerce, Inclusive Divyangjan Entrepreneur Association, and started
working with them at the cluster level. तो जो ये 2000 लोगों की कहानी, दुनिया भर का अवार्ड्स हम लोगों ने जीता, रिकग्निशंस जीता, क्योंकि जो पहले लोग बोलते थे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, अब जाके बोलने लगा कि इन स्पाइट ऑफ 100% डिसेबिलिटी बैठ नहीं सकता है व्यक्ति, बिजनेस करके महीने में 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, आप क्या कर रहे हो? In their own families, they started asking it. So social entrepreneurship is something, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड अगर हम ढंग से कर सकते हैं, उसके साथ हम इकोनॉमिक क्या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आइडिया इज क्रिएटेड. कमिंग बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी, नाउ वी गो टू कंपनी एंड से इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल वी हैव ए 100% फॉर्मूला. अब कुछ मत करो, जस्ट हायर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, it's ensured profitability, scientifically proven. If we can get all these 7 to 10% of country's population, lagbhag every 10th person in the country count, you will find a person with disability. And I am also challenging all of you, अगर इस रूम में बैठे हुए किसी को भी लगता है हम डिसेबल्ड है ही नहीं, जिंदगी में कभी डिसेबल्ड बन ही नहीं सकते, वो लोग मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हैं. बट एवरीथिंग हैज बीन प्रूवन once in a lifetime. All of us need to go through this cycle of disability and disempowerment. So the movement that we created is not for them, but the movement we have created is for all of us. And there are a lot of now Divyang entrepreneurs, professionals with affordability, because accessibility is not there. See, only barrier for me to come here is non-accessible stage. अगर उसको accessible बनाते तब रेस शुरू हो, right? So हम एक ऐसा सेगमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, जब भारत विश्वगुरु घोषित होगी, फ्रंट रो में बैठने वाले में दिव्यांग उद्यमी होनी चाहिए और उनका जो कंट्रीब्यूशन निकल में जाना चाहिए. एंड ऑल आवर प्रोजेक्शन सेज 5 to 7% ऑफ जीडीपी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहती है, अगर हम इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ ला सकते हैं तो बढ़ सकती है. दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. विल डिस्कस मोर. सो टेकिंग अप ए सोशल प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज. बाय द वे, ये कोई केवल दुकानें नहीं चला रहे, ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स भी तरह तरह का रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेटिव सर्विस प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट में गए हैं, मार्केट प्लेस में है. आने वाले समय में आपको ये दिख सकते हैं. सो थ्रू दिस मॉडल वी आर शोकेसिंग, इफ दे कैन डू इट, वी कैन डू इट. व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? टेक अप योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी एज सून एज पॉसिबल. दैट इज व्हाट एल्स. Yeah, thank you, Mr. Mallikarjun. Wonderful deliberation. As you have said कि प्रोफेसर और चार्ट स्टूडेंट, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जानते हैं, आई एम नोन फॉर आस्किंग टफ क्वेश्चंस. आई थिंक सम ऑफ देम वुड वाउच फॉर इट. सो माय क्वेश्चन इज टू यू दैट वी टॉक्ड अबाउट creating dignity, an ecosystem for the people of especially needed. I'll not say disabled, I say differently able. That would be the better term to address them. So where do you see the social inclusion factor coming in developing these social enterprises? Because some of them must be having in the marginalized segment. And how do you think the social enterprises that are created these days, apart from helping those who are differently able, but also does not falter in calculating or considering the social inclusion as a factor? Great question, sir. So that is on the ability part of the persons with disabilities. Our problem with our mind is, when you see me, you will see my clutches and you see my disability, because my abilities are not visible. I need to prove that, right? But if you understand my abilities, if you understand any marginalized community's abilities, for example, corporates not getting right kind of employees, if they hire people with autistic or people's on wheelchair, now the study after study is saying that the company is getting into profitable, even within the business. So we did a study to understand what are the basic traits of an entrepreneur, और एक दिव्यांगजन का प्रोफाइल कैसे रहता है, what is the basic profile of दिव्यांगजन. To our surprise, we realized almost there is a 60% match. Risk taking, need to have a bigger vision than their life. They need to have, commitment towards what they do, conviction towards that. This is a life journey, the struggle, risk-taking, thinking big. This is the life journey of a person with disability. So we thought, ये तो by default 60% entrepreneur है.
इसको केवल एक राह दिखाने का है कि क्या बिजनेसेस कर सकते हैं। तो अगर हम पूरा देश, सो वी आर क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड एबिलिटीज फ्रेमवर्क। जब हम किसी भी व्यक्ति का एबिलिटीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वहाँ पे स्किल की बात होती है, देन वील अंडरस्टैंड दैट स्किल, उस स्किल से जो वो कर सकते हैं, दैट इज वेयर द सॉल्यूशन विल कम इन। सो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट, कल तक जो लग रहा था कि ये असंभव है, वो संभव होता हुआ देखेगा और वो व्यक्ति करेगा। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल करके रखता हूँ सर कि यू नो महाबलेश्वर जैसे एक छोटा सा जगह पे एक दृष्टिबाधित दिव्यांग उद्यमी है हमारे नेटवर्क में, उनका एनुअल टर्नओवर 130 करोड़ है, भावेश भाटिया। आप जानते हैं 130 करोड़ किस चीज़ से कमाते हैं? केवल एक प्रोडक्ट से। वो प्रोडक्ट है कैंडल, 1000 तरह का कैंडल्स है। आप जानते हैं इनका हाईएस्ट, इनका 130 करोड़ में ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सेल किन से होती है? एक ग्रुप से। कौन सा ग्रुप? अंबानी ग्रुप। अंबानी ग्रुप इन्वेस्टेड इन दिस गाय लुकिंग एट दिस स्किल and their entire enterprise associates for their procurement uses Bhavesh ji. He can't see, but his vision is so big. तो ये सब हुआ था इसीलिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने एबिलिटीज़ को सामने लेके आए, they could see that abilities and then an enterprise can create it. What that ended up, now today Bhavesh Bhatia ji is employing 400 plus visually challenged employees in a place like Mahabaleshwar, and वहाँ पे उनको 15 से 25 हज़ार के बीच में एवरी मंथ these guys will earn, and he created a social enterprise just by selling one product, candle. So that is the strength of abilities, if you understand. Thank you, wonderful. A big round of applause for the man who does things by himself. Now we'll move on with our next speaker, who has the unique ability of converting the garbage and bringing a economy out of it in the domain of circular economy, making a company out of it. So without much delay, I request Mr. Praveen Nayak to commence his deliberation. Thank you, panelists, students, guests. हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत समस्याओं का देश है, कदम कदम पे समस्याएं हैं और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है। उस समाधान का आप सॉल्यूशन निकालिए और सॉल्यूशन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, वो चीज़ आपको पैसा देगी। तकरीबन 10 साल पहले भारत में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजराती हैं, उनके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द, कोई भी योजना, उसमें पैसा है। वो गुजराती आदमी है, आपको उनके होठों को समझना है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर एक जगह है, उस समय देश कूड़े से जूझ रहा था, आज भी जूझ रहा है। तो एक बहुत डायनामिक IAS ऑफिसर कलेक्टर थी हमारे यहाँ, उनका नाम है रितु सेन। रितु सेन मैडम ने क्या किया, उन्होंने आदिवासी महिलाओं को इकट्ठा किया जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, हम लोग तो MBA BBA किए हुए लोग हैं, और उनको कूड़े को प्रोसेस, कलेक्शन, उसका पूरा मैनेजमेंट सिखाया। और ये भारत के अंदर पहला जीरो वेस्ट शहर बन के निकला, जिसको अंबिकापुर स्वच्छता मॉडल के रूप में देश जानता है। हर साल राष्ट्रपति का ये अवार्ड जीतता है। अब इसका हमारे प्रोग्राम से क्या लेना देना है? मेरा बैकग्राउंड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, तो मैंने 2 समस्याओं को पकड़ा। एक समस्या को पकड़ा कूड़े को, दूसरी समस्या थी हमारे देश में बेरोजगारी की, तो उसको पकड़ा। अब निकाला सॉल्यूशन। तो भारत के अंदर 2 सक्सेसफुल मॉडल चल रहे थे। पहले मैंने रितु सेन मैडम को अंडरस्टैंड किया, उनसे मिला, उनसे समझा और अपनी इच्छा जाहिर की कि मैडम इस काम को मेरे को करना है। अब बिकॉज वी आर द लिटरेट पीपल, सो हम इसको कैसे करें, तो हमने भारत के अंदर 2 सक्सेसफुल मॉडल की स्टडी की। एक मॉडल था लिज्जत पापड़ और दूसरा मॉडल था अमूल दूध। तो अब अपन को एक मॉडल भी मिल गया। अब चाहिए थी जमीन, मशीन और कच्चा माल।
तो भारत में हमने ग्राम पंचायत, नगर पालिका लेवल पे जैविक खाद बनाने की फैक्ट्रियां लगाने की शुरुआत की, क्योंकि भारत एग्रीकल्चर राष्ट्र है, भारत को जैविक राष्ट्र बनना है। आज आपको अपने बच्चों को क्या खिलाना है? केमिकल फ्रूट और वेजिटेबल या ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल? ये है डिमांड और सप्लाई का गेम। तो हमने, अगर भारत को जैविक राष्ट्र बनना, तो भारत के पास इतनी तादाद में जैविक खाद भी होनी चाहिए। और जैविक खाद बनाने के लिए कच्चा माल क्या है? गीला कूड़ा। तो अब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हो गई, कच्चा माल भी है। मैन पावर के लिए हमने भारत के जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं इनको इकट्ठा किया, और हमने हिंदुस्तान स्वच्छता मिशन ऑर्गेनिक आत्मनिर्भर समिति का थॉट प्रोसेस लेके आए, और हमने सारे कूड़ा वालों को उसमें अपना शेयर होल्डर बना दिया। सो डिग्निटी की बात आपने की थी, यानी अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सर्कुलर इकोनॉमी स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन की, जिसमें भारत का 150 करोड़ आदमी, वो लोग स्टेक होल्डर हैं। हिंदुस्तान का इतना बड़ा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं कूड़ा पैदा नहीं करता। अगर आप कूड़ा पैदा करते हो तो आप हमारी एसोसिएशन के मेंबर हो बाय डिफॉल्ट। तो ये, हाँ, दूसरी चीज, आप कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, आप कागज बनाने का कारखाना लगा लो, प्लास्टिक का लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपको रॉ मटेरियल हमसे ही लेना पड़ेगा, बिकॉज लगभग, और इस पे सब पे यूज करो आप लोग, बिकॉज सारी चीजें देखते हो, तो आप वो भारत सरकार जो पॉलिसीज बना रही है उन पॉलिसीज का डिकोड करो और उसके अंदर धंधा ढूंढो। सो ये मैं बहुत ज्यादा अपनी बात को नहीं खींचूंगा। कुल मिला के गार्बेज क्लिनिक क्या करता है, लोग घरों के आसपास कूड़ा घर बनने नहीं देते थे। हमने भारत में पहली बार ऐसे कूड़ा घर तैयार किए जहां लोग अपने परिवार के साथ लंच भी कर सके और डिनर भी कर सके। आप में से 90% बच्चे, आप लोगों में से कितने लोग मेरे को जानते हैं पहले से? हाथ खड़ा करिए। 2-3। अगर मैं बोलूं 90% लोग मुझे जानते हैं। आप लोग रील देखते हो? कितने लोगों ने गाना सुना है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल? आई एम प्रोड्यूसर ऑफ दैट सॉन्ग। तो ये गाना अभी हमने वरुण धवन को भी दिया था, और वरुण धवन से हमने पैसे नहीं मांगे थे। जब वो दिल्ली आए तो हमारे साथ उन्होंने फैमिली लंच किया। ये हमारी सक्सेस है। हमारा कूड़ा 140 कैटेगरी में अलग अलग करते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट भगवान ने भेजा है। भगवान ने महिलाओं को ये गिफ्ट दी है, सेग्रीगेशन जिसको बोलते हैं। महिलाएं गेहूं में से कीड़े अलग करना जानती हैं, चावल में से कंकड़ अलग करना जानती हैं, तो ये इलास्टिक, प्लास्टिक, लोहा, ये सब अलग करना तो उनके बात का काम है। सो वुमेन ड्रिवन प्रोग्राम हमने भारत के अंदर ले आए, और उन महिलाओं को जिनको लोगों ने सोचा कि ये कचरा है, किसी काम की नहीं है, बेकार है, सब कुछ है, वो हमारी सुपरवाइजर होती है। सो भारत की ये जो समस्या है कूड़े की, इसका समाधान है हमारे पास है, और हम लेके आएंगे। अभी हम देश के अंदर, क्योंकि ये पूरी इनफॉर्मल इंडस्ट्री है, सारे आपने देखे कबाड़ी वाले होते हैं। डिग्निटी की बात, कबाड़ी वाले के पास 50 लाख रुपए होंगे, लेकिन उसके पास कोई इज्जत नहीं है। MBA BBA किया हुआ बच्चा कबाड़ी नहीं बनना चाहता। सो हम भारत में पहली बार ऐसे शोरूम लेके आ रहे हैं, जैसे हल्दीराम का शोरूम होता है, दैट इज द कबाड़ी वाला। टाई लगा के बैठा है, पूरी इन्वेंट्री उसके पास मोबाइल पे है। सो वी विल ट्रांसफॉर्म द इंडिया। देयर इज नो कबाड़ी वाला, देयर इज नो स्क्रैप डीलर। वहाँ बिग बाजार, हनी मनी टॉप, पिज्जा हट या डोमिनोज टाइप का कोई हमारी एक आउटलेट होगा, और वो उसके साथ सारे जो जैसे जोमेटो है, आपका ब्लिंकिट है, ऐसे रैक पिकर्स कनेक्टेड होंगे। So this India will globally transform the waste management industry. Thank you very much. Wonderful. I mean, the confidence दिखता है जो इनका काम है. Obviously, we are very thankful that you made your very interesting presentation. But एक question है मुझे, as I said, being a professor, I have always loaded with lot of questions. The first question that I am going to ask you is that how do this, garbage disposal industry, if I say, the balance between commercial viability vis-a-vis consumer responsibility? Because we produce garbage, and also for an organization to remain viable, commercial viability की बात कर रहा हूँ, I'm not talking about जो government support से चल रहा है, अपने पैरों पे जो खड़ा है। इन दो चीज को एक ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस कैसे कर सकती है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये आप बोलेंगे कि प्रवीण जी आपके पास अगर ऐसा आइडिया है तो ये चीज़ें हो क्यों नहीं पा रही, दिल्ली में क्यों नहीं हो पाती, सब जगह कूड़ा दिख क्यों रहा है। तो बेसिकली इन लोगों के पास माइक्रो प्लानिंग की कमी है। आपके पास मेगा प्लान है, आपका माइक्रो प्लान नहीं है। हमारा प्लान है कि 100 हाउसेज हैं, 100 हाउसेज के ऊपर हमारी एक महिला अपॉइंटेड है, यानी हम कूड़े को हाउस अरेस्ट करते हैं, हम आपके किचन से ही कलेक्ट करते हैं। नाउ दूसरी बात, आपने फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात बताई है, तो मैं जिसको अभी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे बता नहीं पाए, मतलब अवेलेबल, क्योंकि टाइम की कमी है। आप लोग ना मेरा नाम डालना है गूगल के ऊपर, मेरा नाम प्रवीण नायक है। आप वैसे भी नहीं बोलोगे, नायक यानी अनिल कपूर की एक पिक्चर आई थी, और प्रवीण मेरा नाम है। तो आप डालिए और सिंपल गार्बेज क्लिनिक नाम डाल दीजिएगा या कुछ भी डाल दीजिएगा तो वो आ जाएगा, तो आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। अब फाइनेंशियल वायबिलिटी की आपने बात कराई, तो एक कूड़ा बीनने वाला जिसके पास घर भी नहीं है, अगर हम भारत के बात करें तो सबसे कॉर्नर पे भारत के अंदर जो व्यक्ति खड़े हैं वो दो लोग खड़े हैं। एक खड़ा है भिखारी, चूंकि भिखारी को हम एंटरप्रेन्योर नहीं मानते, क्योंकि वो उसका अपना एक सेट एजेंडा है, हो सकता है उसके अंदर डिसेबिलिटी हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो कूड़ा बीनने वाला है उसके अंदर स्वाभिमान है। वो बंदा भिखारी नहीं है, वो निकलता है, मेहनत करता है। अब जो वो मटेरियल कलेक्ट करता है उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन जब वो मार्केट में बेचने जाता है L3 लेवल के बंदे को, अगर डिटेल में समझना होगा तो आपको गूगल पे इंटरव्यूज मिल जाएंगे मेरे, जब वो L3 को बेचता है तो ये लगभग 12 से 15 रुपए किलो बेचता है, यानी कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन कितने परसेंट है? 100%। जब L3 ये मटेरियल L4 को बेचता है, जो डीप पॉकेट वाला है, जिसके पास वेयर हाउसेज है, तो ये 15 रुपए किलो का माल 25 रुपए किलो के रेट पे जाता है। यानी जिसको हम इलिटरेट बोल रहे हैं, कबाड़ी वाला बोल रहे हैं, उस धंधे में इन्वॉल्व है जिसमें मार्जिन लेवल 70% है, लेकिन डिग्निटी नहीं है। तो क्या हम इस हॉल में बैठे लोग ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जो उसको डिग्निटी प्रोवाइड करा दे, उसको मेन स्ट्रीम के अंदर ले आए? सो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें डिस्कशन करने की भी ज़रूरत थी, और हम लोग कर भी रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो ये अब आपने जो उसके अंदर फाइनेंस की बात की है, तो फाइनेंस उसमें है। ग्लोबल प्रेशर भारत के ऊपर है, जो भारत ने सारे कॉरपोरेट्स के ऊपर डाल दिया है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। ये जो प्रोग्राम हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कशन की गार्बेज क्लिनिक में, ये 17 में से 13 गोल अचीव करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और भारत के हर कॉरपोरेट को हमारी जरूरत है। दूसरी चीज CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इसके अंदर फंडिंग आती है। बल्क वेस्ट जनरेटर की पॉलिसीज पहले भी लागू हो गई। 1 अप्रैल 2026 से भारत के अंदर BWG पॉलिसी लागू होने वाली है। इनको लाखों लोगों की आवश्यकता है। हर शहर के अंदर जो भी आप 20,000 मीटर या इससे बड़ा क्षेत्रफल का शहर का एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं, वो सारे कस्टमर हैं, कोई भी हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो कितने लोगों को बिजनेस की संभावनाएं हैं। आपको वेस्ट मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया तो आपके शहर में ही कम से कम 30 से 40 क्लाइंट हैं, क्योंकि ऐसे एंटरप्रेन्योर नहीं है, मैं इसको बता रहा हूं। सो कहने का मतलब है ये सारा पैसा है। अब आप अगर सर्विस दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट पैसा आप लोगे। आप एवरी हाउस होल्ड से आपको यूजर चार्जेस लेने हैं। एक घर है जो 100 रुपए देता है, एक दुकान है जो लगभग 200-300 रुपए देती है। अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं, 8 लाख अपार्टमेंट है, और 100 रुपए अगर एक यूजर से आपको कलेक्शन मिल रहा है, कितना पैसा आता है? सो कहने का मतलब, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब इसका जब कभी किसी को बिजनेस मॉडल समझना होगा, बिकॉज आई कुड नॉट शो द PPT, तो मैं आपको, आप अपने शहर की पॉपुलेशन बताना, मैं वहां पे कूड़े से इनकम बता दूंगा कितनी आ रही है, और पूरी टेबल वाइज एक्सेल सीट में। सो यस, इट इज नॉट द सस्टेनेबिलिटी इज द मिथ। सस्टेनेबिलिटी झूठ है वेस्ट मैनेजमेंट के केस में। प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, तभी चलेगा वो। हमें भारत को सस्टेनेबल मॉडल की जरूरत नहीं है कूड़े के काम में, भारत को चाहिए प्रॉफिटेबल मॉडल और बिजनेस मॉडल। अगर ये मॉडल आपने मार्केट के अंदर डाल दिया तो कूड़ा खत्म है, और ये है हमारे पास। जो कूड़ा कोई नहीं खरीदता भारत के अंदर, वो कूड़ा भी अदानी खरीदता है और हम बेचते हैं। सो बस समझने की जरूरत है इस डोमेन को। थैंक यू वेरी मच। Okay.
So I think this is a very, loud statement he has given, sustainability. Now I'm going to refer to our next speaker, समीक्षा दीदी. मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ? अच्छा ठीक है, धन्यवाद. So समीक्षा दीदी, I think वहाँ से let's start from what I think Mr. Nayak has concluded, sustainability. क्योंकि ऐसा रिसर्च कहता है कि दुनिया में हर 12th job coming from social enterprises after tourism. So if it is not sustainable, if it is not economically viable, so आप चूंकि grassroots level पे काम करती हैं, तो how do you think that organizations would be created in this level? तो आपके deliberation में I want a coverage on that, if you can. पहले सब सीधे थोड़े से, पूरे दिन से थके हुए हैं, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पे होगी तो मेरी बात दिल तक पहुंच जाएगी. सभी ओम की ध्वनि एक बार तो करेंगे. ओम युग दृष्टा संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय. आप सब मेरे साथ जितना रिस्पॉन्सिव बनेंगे तो ये दीदी जो आपके सामने यहाँ है वो आप जो दिल से बैठा होगा उसके दिमाग तक जाएंगी और जिसके जो दिमाग से बैठा है उसके दिल तक जाएगी. तो इसलिए आपका रिस्पॉन्स मुझे उतना ही चाहिए. तो मुझे जो थॉट्स आप तक पहुँचाने हैं, जो आपके दिल को मुझे छुलाना है, वो छूने के लिए आपका ये जो एक्सप्रेशंस और आपके जो ये फेस के भाव है ये मुझे छूने चाहिए. सब एक बार ज़ोर से बोलेंगे वंदे मातरम. देखिए कितनी लो आवाज़ है. भारत के लिए जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ में ऐसा जोश होना चाहिए कि कम से कम अमेठी तो हिल जाए. भारत माता की, भारत माता की. ये सेशन लंच के बाद का है तो और एक बार और जय जोर से आनी चाहिए. भारत माता की. मुझे पता है मेरे पास समय बहुत कम है, पर अगर 1 मिनट भी मिल जाए और वो आपके दिल को कनेक्ट कर जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कुछ थॉट्स कम दे पाऊँ. चल चरखा, चल चरखा, और उसका स्लोगन है रुको रुको लौट चले. आप लोगों ने पूछना चाहिए था सर को मुझसे कि रुको रुको लौट चले तो आप कहाँ लौटाना चाहती हो. पहले हम कहाँ लौटाना चाहते हैं आपको. जब दुनिया बढ़ने की, प्रॉफिट की और इन चीज़ों की बातें कर रहा है तो हम लौटने की बात क्यों कर रहे हैं. क्या आप कभी गाड़ी चलाते हैं? 4 व्हीलर 2 व्हीलर, कोई मिरर होता है? होता है. क्या करता है वो मिरर? आपको आगे की चीज़ें दिखाता है कि पीछे की? बैक साइड या फ्रंट साइड? बैक साइड. तो क्यों दिखाता है? यही मिरर है ये चल चरखा. ये चल चरखा एक सोच है, एक चिंतन है, एक जागृति है, एक बदलाव है. जिस विश्व गुरु की आप बात करते हो उस विश्व गुरु की आज वर्तमान स्थिति है कि वो टैक्स का गुरु है, वो लोन का गुरु है. आज जो बच्चे पढ़ लिख कर डिग्री कर रहे हैं, आज अगर उनको गाड़ी खरीदना है तो ईएमआई उनके पीछे है. एक फ्लैट है तो उसके पीछे ईएमआई है. न परिवार है न कोई है, केवल दौड़ है नौकरी की. 9 से 5 आप नौकरी करते हो. आपको अगर दिवाली भी मनानी हो तो 2 दिन का प्लान करना पड़ता है. 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 2 दिन आप दिवाली मनाते हो. ये ज़िंदगी क्या भारतवासियों की थी? ये गुलामी नहीं है तो क्या है? ये मानसिक गुलामी है. चरखा सोचते ही आप सोचोगे कि वो गांधी जी और उनका चरखा लेकर दीदी बैठ गई है. नहीं, वो चरखा तो तब था जब अंग्रेज यहाँ उपस्थित थे. आज तो अंग्रेज जाने के बाद उनकी सोच आपके साथ है. आज आपके साथ उनकी सोच है. उस सोच के कारण देखिए आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपने इन चीज़ों को कि आपने कितनी, जिसको आप अपनी डेवलपमेंट मान रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट है या नहीं. हम आपको लौटाना चाहते हैं भारत की ओर. आप बन चुके हैं इंडिया. इंडिया जहाँ पर नौकरी ही नौकरी है, और भारत वो था जहाँ केवल सोना ही सोना था, जहाँ पर नौकरी नाम की वस्तु ही नहीं थी. अगर हमने किसी को कोई चीज़ दी है, अगर वो खेती व किसान है और मैं आर्टिसन हूँ या कोई कारागिर हूँ, तो मेरी चीज़ उसको जाती थी, उसका अनाज मुझे आता था. पैसा हमारे पास था ही नहीं. सारी नौकरियाँ, सारे बैंक, सारे लोन, सारे टैक्स, सारे प्रॉफिट, सब कुछ आपका है इस पैसे के कारण. आप कहोगे दीदी पैसा नहीं तो कौन पूछेगा.
आप देखिए ना, इसीलिए तो हम आपको लौटाना चाहते हैं उस भारत के दर्शन में, भारत की आत्मा बसती उसके गाँवों में, और उसका भविष्य और उसका वर्तमान संवारने की जिम्मेदारी होती है आप यूथ की। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी तरह डिग्री होल्डर हूँ, मैं भी आपके सामने इंग्लिश में पूरी बात रख सकती हूँ, पर वो आपके दिल को छुएगी नहीं। सपने आपको कभी भी इंग्लिश में नहीं आ सकते, क्योंकि आप भारतीय हो। और भारतीयों को जागना होगा कि हमें नौकरी की ओर नहीं बढ़ना, हमें एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप कह रहे हो, मैं उसको कहती हूँ आत्मनिर्भर भारत की बात करना चाहती हूँ, उस स्वाभिमान की बात करना चाहती हूँ। ये कोई स्कीम नहीं है, इसको हम जीते हैं। ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे थे सर, 33% आप रिजर्वेशन देते हो भारत की इकोनॉमी में वुमेंस को। आप देखिए आदिवासी महिलाओं को, उस जेल की महिलाओं को, ऐसे ऐसे पहाड़ों में बैठी महिलाओं को जहाँ चल चरखा पहुँचा है। हम लोग तो सेलिब्रेट से चल चरखा ऑर्गेनाइजेशन के एक आध्यात्मिक संत ने हमारे अंदर वो दृष्टि जराई। हम जाते हैं उनके पास, हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम सब छोड़ के बैठे हैं, पर हम आज भी भारतीय हैं, हमारा खून खोलता है। अगर भारत के बारे में कभी भी कुछ हो तो आप देखना आधी रात में भी हम खड़े हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। और इसी भारतीयता का इतिहास हम यूथ से छुपाया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, और जिसके चलते आज हमारी जो ये सारी फैसिलिटी हमें दिख रही है, इसमें निर्जीवता है, इसमें वो लाइवनेस नहीं है जिस लाइवनेस के कारण हैप्पीनेस आपके चेहरे पर आए। आज मैं आपके आंखों में, मेरी बात आपको रियलाइज़ हो रही है और आप इससे एग्री कर रहे हो, ये मुझे पता है, और इसके मैं सारे आपको डेटा दे सकती हूँ। आप तो आज एआई के ज़माने के स्टूडेंट्स हो, गूगल खोलिए और आप पूरा डेटा देख लीजिए। हैंडक्राफ्ट का मार्केट कितना है, पहले कितना था, पहले इंपोर्ट कितना होता था और एक्सपोर्ट कितना होता था, और आज इंपोर्ट कितना होता है और एक्सपोर्ट कितना होता है। ये सारे डेटा हमारी आंखें क्यों नहीं खोलती, क्यों हम नहीं जानते, क्यों हम उस दिशा में नहीं बहते जहां हमें बहना चाहिए। चल चरखा भारत की 15 केंद्रों को चलाता है 6 राज्यों में, जहां पर आदिवासी महिलाएं भी आती है, चाहे वो तिहाड़ जेल में। मैं इंटरनेशनल वुमेंस को भी सिखाती हूँ। वो क्या कहती है पता है आपको? वो हमसे कहती है कि दीदी जितना क्राइम आपके यहाँ के लोग करते हैं उतना क्राइम हमारे कंट्री के लोग करते ही नहीं। हमारे यहाँ केवल पैसों के कारण हम एनडीपीएस में या ड्रग्स के इसमें आते हैं, आपके यहाँ तो हर जगह पर हर बात में क्राइम है। आपके पास कोई भी समय नहीं है एक कंट्रोल करने का आपके इमोशंस को। ऐसी महिलाएं तक जब इन हैंडीक्राफ्ट्स को कर रही हैं, तो आप देखिए जब हम चल चरखा और हस्तशिल्प के और हथकरघा के माध्यम से हम आपके साथ स्वास्थ्य को लेकर आते हैं। आप जिस सस्टेनेबल मॉडल की बात कर रही हो, उस सस्टेनेबल के 6 पहलू मैं आपको आपके भारतीयता में समझाऊंगी कि चल चरखा उनको लाने में सक्षम है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन और स्वस्थ चेतन। इन 6 मॉडल के आधार पर आपका भारत विश्व गुरु है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं किसी को काट नहीं रही हूँ, भारत विश्व गुरु है, बस वो सोया हुआ है, उसकी कला है। आप देखना पहले माचिस की डिब्बी में 50 मीटर का थान हमारे कारागिर रखते थे, और इंग्लैंड की रानियाँ कोई वस्त्र नहीं खरीदती थी, केवल हमारा वस्त्र खरीदती थी। उन लोगों को पता था कि हम सोने की चिड़िया हैं। हमारा सोना उन्होंने कैसे लिया? क्योंकि हम हमारे भारतीयता को भुला बैठे। आज वक्त आया है उस सोने को वापस लाने का। उस सोने को हम वापस ला सकते हैं, और हमारे स्किल्स के थ्रू। ये कोई ऊपर ऊपर बात नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। आप एक महिला, हम उसको स्किल पे ट्रेन करते हैं, उसके बाद हम उससे उम्मीद नहीं करते कि वो हमारे यहाँ ही काम करे, वो हमारे यही हमारा माल बेचे या लाए। वो आज़ाद है। एक स्किल पर्सन, एक कौशलयुक्त ह्यूमन बीइंग उस राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। एक चेतन धन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, और उस संपत्ति को हम तैयार कर रहे हैं। उस संपत्ति को जब हम तैयार कर रहे हैं, देखिए आज वो महिला जब आपस में ही बैठते बैठते गाँवों की महिलाओं को वो कह देती है कि मैं यहाँ जा रही थी, आज मैंने ये साड़ी बनाना सीखी, साड़ी बनाते वक्त दीदी ने मुझे 500 रुपये एक साड़ी का दिया है, देखो। तो जब वो आपस की महिला को, उसको भी लगता है अरे मैं 9 से 12, तो 12 बजे सब चले जाते हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ काम नहीं है। उस गांव की महिला वो भी कहती कि मैं कौशल युक्त करूँ, भले ही वो पैसे से हमारे पास आए, पर उसके बाद उसमें उम्मीदें, उसमें सपने होती है। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए स्कूल जाते वक्त साइकिल खरीद ली, जिनके घर में पानी नहीं आता था हैंडपम्प खरीद लिया, बेटी की शादी करवा दी। जेल में रहने वाली महिलाएं हैं, अपने घर से
अपने कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करती है, जिनको मूल धारा में लाने का काम हम करते हैं। ये सारी बातें हम आपको सुनाएंगे, आप समझिए, पर आप जब उन लोगों से मिलोगी, उन महिलाओं से मिलोगी, आत्मनिर्भर किसको कहते हैं? जब वो अपनी हाथ की बुनी हुई साड़ी सुरक्षा के साथ, आप नौकरी की तो बातें कर रहे हो, पर सुरक्षा है आपके पास? वासना से भरा हुआ है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप अपने रूह पर भी विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में वो महिलाएं आती है, अपनी एक साड़ी को लेकर जाती है और उनको खुशी होती है। मुझे पता था मुझे समय कम ही मिलेगा, कोई बात नहीं, मुझे पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। थैंक यू। काम ही कुछ ऐसा है दीदी, मॉडरेटर का, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आपने आपकी बात आई थिंक पहुंचाने में संपूर्ण तरीके से सक्षम रही हैं आप। बट मेरा क्वेश्चन आपके लौट चलो तो हमने पूछा नहीं, बट जो पूछना था वो मैंने कुछ और ही पूछ रहा हूँ। जो था कह रहे थे आप? नहीं, वो मुझे याद है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपने अपने जीवन में कई महिलाओं को ट्रेनिंग दी होगी, कई को सक्षम बनाया होगा। जो स्किल की बात कर रहे हो, जो हुनर की हम बात करते हैं, तो कितने प्रतिशत उसमें से एक उद्यमी के रूप से उभर के आए? और जो आए तो क्या खासियत रही होगी आपके हिसाब से कि कौन सा ऐसा उनका हुनर स्पेशल आपको उनके अंदर दिखा? जो, क्योंकि हर जगह तो आप हो नहीं सकती, तो भारत देश बहुत बड़ा है, कई सारे हमारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको जानना है कि किस तरीके से वो आगे आ सकते हैं। सिर्फ स्किल होना ही जरूरी है या फिर कुछ और उनके अंदर आप देखती हैं, इसी हिसाब से उनको आप तराशती हैं? देखिए, स्किल बेस है, किसी भी चीज़ का स्किल बेस है, वो उसके आत्मविश्वास को भरता है और उसको मजबूत बनाता है। हमने उसे केवल एक विधा सिखा दी कि कपड़ा किस तरह बुना जाता है, अब उस कपड़े में किस तरह के रंग भरना। और एक इंसान के पास दिल के साथ दिमाग भी है, उसके दिमाग पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। और जब उसको वो कलाएं अंतरंग से जब उसको पता चल जाता है कि इसमें वो कुछ बदलाव कर सकता है, तो अपने आप अपने इस प्रोडक्ट को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करता है। और आप जो ये कह रहे हैं, तो हमारी सारी महिलाएं स्किल बनने के बाद ट्रेनर बन जाती है। ट्रेनर ऐसे बनती है कि अब उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप स्वयं कर सकती है। और हमारे जो हैंडलूम्स है, चाहे वो हमारा आरी वर्क हो, चाहे कुछ हो, घर की छोटी सी 4 दीवारी में कोने में भी वो काम कर सकती है। उसमें लो इन्वेस्टमेंट है, मैं ज़ीरो नहीं कहूँगी, पर लो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें वो घर की पेड़ से तोड़ी हुई 4 लकड़ियों से भी लूम बना सकती है। और जब उस लूम का मैकेनिज्म और साइंस वो सीख जाती है, तो उसके मन में आए तो अपने बच्चों को सिखा देती है कि तू मेरी बॉबिन भर दे। पति जब रात में घर पे आता है तो उसको कहता है थोड़ा तुम बुन लो 1 मीटर, थोड़ा मैं बुन लेती हूँ। तो ऐसे पूरा परिवार सस्टेन हो गया। जब एक परिवार खुशहाल बन रहा है तो बाजू वाला कैसे अछूता रह सकता है? वो कहता तुम क्या कर रही हो, वो भी उसके साथ जुड़ जाता है। एक से एक, एक से एक, एक से एक, चैन से चैन बनती जाती है और कड़ी बनती जाती है। हिमाचल में महिलाएं हैं, आज उस सेंटर पे हम नहीं जाते क्योंकि उस एरिया में रहना हम लोगों के प्रकृति के अनुकूल नहीं हो पाता। आज देखिए 4 महीने की ठंड चल रही है, सारे ट्रेनर काम कर रहे हैं और एक का घर एक पहाड़ पर है तो दूसरी का उस चोटी पर है गाँव में। वो एक एक गाँव को लिए बैठी है, वो एक एक गाँव को लिए बैठी है और हम लोगों को वो प्रोडक्शन भेजती है और हम उनको सैलरी भेज देते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप हो गई, न छुट्टी का डर, न कुछ, अपनी स्किल, अपनी मेहनत का जितना बना उतना पाओ। तो ये उनकी इंटरप्रेन्योरशिप है। मार्केटिंग की उनको टेंशन नहीं, क्वालिटी जहाँ है, भारत सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, जहाँ क्वालिटी है वहाँ अपने आप लोग कहते हैं ना, खुशबू को देखकर मक्खियाँ भिनभिनाती है, ऐसा हो जाता है। यही है इंटरप्रेन्योरशिप हमारा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। ये साड़ी आप देखिए, आप छुइए इसको, साड़ी का उतना ज्ञान है नहीं, साड़ी ही नहीं छूना आपको, इसकी कला को देखिए, आपकी आंखों को तो है ना कि अच्छी बुरी। आप देखिए इसमें उन्होंने इमोशंस बुने हुए हैं, इसमें अपना सुख दुख रखा हुआ है। आई अंडरस्टैंड। आप देखिए ये कला उनके हाथों की बनी हुई है, एक अलग ही लुक देती है। हम मशीनों की भी बात नहीं करते, जहाँ बिजली लगेगी और जहाँ इन्वायरमेंट को कोई भी टच हो। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। So, मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जामिया से आया हूँ इसलिए तो शेरो शायरी का है कि कह रहा है शोरे दरिया से समुंदर का सुकूत, कह रहा है शोरे दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही खामोश है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आई थिंक वी हैव कम टू द लास्ट प्रेजेंटर ऑफ द डे, मिस प्रेरणा। आई थिंक शी इज अगेन in domain of sustainable tourism. So we have heard challenges to sustainability. Now they are defending sustainability. I mean, it was the divine intervention. I must say that was divine intervention. We did not plan it in this way, but it evolved like it.
No, bilkul. I'm agreeing to it. So over to ma'am. So I'll just give a brief about what EcoPlore does, and I think it will be very different from what Didi said and what I will be saying. I will be saying in English because that's my background. So EcoPlore is India's largest platform for sustainable hotels and experiences, and we have curated 1,500 plus eco hotels in the entire country. And there's two common element which is present in all the eco hotels we promote. As a layman who doesn't have much knowledge about sustainability, because greenwashing is very rampant, it was rampant in organic industry and now even in tourism or any sustainability domain. So all these hotels which we promote, they are made of local architecture. So when we talk about local architecture, these hotels are either made of mud, wood, bamboo, stone. They are not cement and brick structures. And they have a minimum of 30% trees inside their campus. Because when we talk about sustainability, trees are the best technology to fight against climate change. So this is from the sustainability perspective, because our vision is to promote sustainable living. And when, as a tourist, you go and visit these hotels for maybe 2 nights, 3 nights, you're exposed to a sustainable lifestyle. And you're inspired to follow some of those elements back in your life when you come back to your city or wherever you're coming from. Now that is from the sustainability angle, but from a customer perspective, because at the end it's a business and it is about demand and supply. So when we started in 2016, we started talking about how these hotels are having rainwater harvesting, solar panels, composting, but the tourists had no interest in it. They were interested in fun, what are the activities they are going to get, how much fun, because they don't, when they're going on a holiday, they're going for leisure and they don't want to have any baggage of responsibility on them. So around 2019, this is again a journey of entrepreneurship where we learned that for customers or from the marketing perspective, we need to talk about the experiences which these hotels are providing. So I'll just share some examples of some of our hotels. So we have a property in Gir, Gujarat, which is the only place where you can see lions. And it's India's largest living mango museum. So this property, they grow 160 varieties of mangoes inside their campus. And I remember when I visited that, like I was crossing agriculture fields, and the moment I entered that property, it was like I've entered a forest and a sanctuary. And they have some rooms where you can actually see crocodiles from the balcony of your room. So that is the closeness to the nature. Then we have a property which is around 2 hours from Goa airport, and they have a private waterfall inside the campus. So in 15-kilometer range from the hotel, there is no village, no city, no urban civilization. And I visited that around 3-4 years back, and I remember there was no network also. So it was like a luxury to actually live in a place with no network. And I remember seeing a giant squirrel just from the top. And if you walk like 5 minutes from your room, you can experience the waterfall which only the people living in that hotel have access to. And the place where you're having your dinner or lunches, you have a water stream next to flowing by, and all the food served to you is actually grown in the property. So most of our hotels, they grow their own vegetables, their fruits, a lot of them also grow grains, and they have a lot of activities. So when you book these hotels, you get to experience nature walk, water surfing, village tour, hiking, birding. So people who are travelers are mostly from cities, and especially metro cities. And as Didi was telling that how our life has totally changed, and like her point was returning to, like our tagline is returning to the roots, and what she was saying that hum apne पहले का जो जीवन है उसमें लौट चलिए. So what our vision is the same, that the lifestyle which our grandparents followed, they were sustainable by default. They were reusing the old cloth, they were reusing the old glasses, they were not they were not eating packaged food or the ordered food the way we are. So by default their lifestyle was sustainable, and today we just need to repeat that. I think, yeah, that's what we do. And then we have a mud house in Delhi NCR, but that's a little different. Wonderful. I mean, that takes me to the, I think, interesting question, because the moment you talk about sustainable tourism, so it comes at a price, right? So unless until the value economics is being walked very nicely and communicated across the table to your consumers,
it becomes a difficult ball game to maintain it and for a sustainable basis in terms of economic viability and environmental sustainability. So how do you think that a product like yours would need to dabble in both sides? So how they actually communicate the value, and how at the same point in time how to ensure sustainability of this product? Because your case may be a success story, but there are maybe other entrepreneurs sitting down there, or some of them watching it live right now might need to take inspiration and proceed forward. There are 2-3 things. Like if we think about sustainability products, sustainable products and services in the market, by default our mind thinks it will be expensive, it will be premium. And when I talk about sustainable hotels, like when I started my journey, and I don't come from a tourism background, most of the people who were working in the domain of sustainability, they were selling high-end premium hotels at the rate of 30,000 per night and beyond. So, and they are like brands, like 7-star, 5-star hotel chains, which call themselves sustainable, and they have taglines like responsible luxury. And in the name of sustainability, they have maybe installed sensors where you walk in and the light switches on, and you walk out, it switches off. That's not what sustainability is about. And when he's talking about the balance, so 50-room hotel can never be sustainable, because the amount of resources and the energy which will go into running that hotel is huge. Most of our properties which we promote, they are in the room size of around 10 hotel or 10 rooms to 15 rooms, maximum 15. Another point of profitability is like who owns these properties. So if it is run by a hotel chain, which is owned by somebody maybe from Mumbai, Delhi, or maybe living abroad, the money, the benefit, the profit of that business is actually going into the pockets of the person living in the city, and they have no connect to the grassroots conservation. So in our case, like most of the property owners we focus on are almost 50% of them, they are local people. So these are community-run properties owned by local villagers. For example, our first property which we came up with in Jim Corbett, and it's one of our best-selling hotels. It's almost 20-year-old. They started with simple tents, and now they have around 11 mud cottages. And they're owned by local people. What they understand, they have roots. They have lived for generations over there. They will, even if they grow their business, they will not grow to the level where they are going to damage it completely and just think from the commercial perspective. So they have, like, I'm giving this example because this is owned by local people. They have grown over last 20 years, but they still maintain a certain amount of greenery. They just chose to build with sustainable material. They take people, they take all the guests on forest walk. Like I remember when I visited there as a tourist, they told me that how this termite wall in the forest actually helps in decomposing the bigger roots or the bigger barks. So how even the termite plays its role in the ecosystem in the forest. So when you come to know about these specific details, I think your closeness with nature increases. And one major reason why our lifestyle has become so non-sustainable today is because the moment, like I live in a mud house in Delhi, and the moment you, there's mud here. So you think mud is dirty. You won't walk barefoot on in the rooms. Earlier, during our grandparents' time, we never used slippers inside the houses because even the houses were made of earth or natural materials. Now it's all tiles, so I think it doesn't make sense also to walk barefoot, but we were connected with nature. Every house had some trees, had some fruit trees, maybe a guava tree or a mango tree. Today you don't have that was a luxury. Today you don't have houses which can even have small pots. So I think we were very connected in our life 40 years, 50 years back. And in terms of tourism, when I was a child, I used to visit my father's village, which is in Nalanda. And I remember spending my 2 months of summer vacation in a rural atmosphere. Today we have called it rural tourism because the grandparents also no longer live in the village, and your child doesn't have access to rural living, which we had access to. I think our generation, or at least my generation, we are very fortunate that we have seen a life where we remember writing letters, and we are seeing a life today which is totally AI driven, and we are really fortunate. And I feel bad for the
kids who are born today or maybe like in the next few years, because they have lost that connect with the nature. And we can't blame them because we are the ones who have destroyed the nature, and we are facing the repercussions of it on a daily basis. I think that's a very good answer to the value creation. But taking cue, I think we have concluded the deliberations. Now we'll go for a central question common to all. I think what Prerna had just concluded, I'll take it up from there, that since things people believe that going destroyed and we could recreate it. So my question to you all would be, given a chance, अगर आपको Indian marketplace में कुछ रीडिज़ाइन करने का, कुछ बदलने का अगर कोई अवसर मिले, जिसमें हम इक्विटी को, डिग्निटी को, जहाँ से हमने शुरू किया था, उसको हम ला सके लोगों के बीच में, वी कैन एनकरेज पीपल, ताकि कोई सोशल स्टिग्मा ना रहे, सोशल इंक्लूजन को हमको अलग से कहना ना पड़े, किसी दिव्यांग को हमको अलग से खड़ा ना करना पड़े, मेजर ना करना पड़े. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन so that we can have a very sustainable ecosystem, because that's what we have been talking, and also we can redesign the market forces or market economy. क्या बदलना चाहिए? Over to you, sir. थैंक यू सो मच. समीक्षा दीदी, आपने अंदर की जो भाव है, जो मैं बात कर रहा था कि जिन आत्माओं को जगाने की बात, जागृति आपने दी. 26 साल पहले इसका आंसर मैं कहता हूँ कि हम वी एज एन इंडिविजुअल्स इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. जब जेएनयू का छात्र मैं था, मेरे मन में एक बात आई कि भारतीय भारतीय तो कहते हैं, हाउ डू आई प्रूव दैट आई एम ट्रूली भारतीय. तो एक डिसीजन मैंने लिया था, जिसके साथ कोई नहीं है, क्या हम उनके साथ रह सकते हैं. एंड यू नो, वन डिसीजन कंज्यूमर सेगमेंट कैसे बनती है. देन यू नो आई बिकम प्रेसिडेंट ऑफ फेयर ट्रेड नेटवर्क, दुनिया भर में घूमे, बहुत सारे कारीगरों को ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ा. लेकिन वो जो पहला प्रश्न मेरे अंदर था, मैं भारतीय हूँ, इसका प्रमाण मेरे पास क्या है. तो जो निर्णय मैंने लिया था, क्या मैं अपना वार्डरोब को बदल सकता हूँ, क्या एक कारीगर द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट को मेरे शरीर पे ला सकता हूँ. आप जो ये खादी देख रहे हैं, जेएनयू के छात्र के नाते जो निर्णय मैंने लिया था, आज इसे मैं खादी पहनूंगा. शर्ट्स तो पहन नहीं सकते थे उस समय, तो खादी जैकेट एक आया. उस दिन से लेकर आज तक यू नो वी वेयर खादी. बट मुझे पता है, जब मैं खादी पहन रहा हूँ, वो सशक्तिकरण का किस तरह का सिंबल है. जहाँ से वो आर्टिजान या कारीगर ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका जीवन में ये जो 1000-1200 रुपए का एक जैकेट मैं दिल्ली में रहते हुए खरीदता हूँ, उसका किस तरीके से सशक्तिकरण होती है. दिस इज व्हाट वी डिड. तो जब कन्विक्शन लेवल मेरे अंदर आया, आई स्टार्टेड कन्विंसिंग माई ओन फैमिली, भैया लेट अस कन्वर्ट 10% ऑफ आवर वार्डरोब इनटू हैंडमेड, हैंडलूम, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स. कोई ऐसा चीज़ें 20% ऑफ आवर किचन इनटू सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक, नेचुरल प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, स्वास्थ्य की बात है. 30% ऑफ ऑल आवर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी क्रिएट, कैन वी थिंक ऑफ गेटिंग इनटू सस्टेनेबिलिटी. अब शोकेस के लिए बड़े बड़े पेंटिंग्स लगाते हैं, उसके बजाय क्या आप हैंड पेंटेड, गांव से आए हुए मड पेंटेड ऐसे चीज़ों को अपने घरों में ला सकते हैं क्या, विदाउट लूजिंग एस्थेटिक्स, रिस्पेक्ट, वैल्यू फॉर मनी. वी आर एबल टू एम्पावर द सोसाइटी. तो वी एज एन इंडिविजुअल जब तक ये नहीं सोचेंगे, वो होगा नहीं. इसी बेसिस में हमने एक थियरी ऑफ चेंज बनाया. आपने जो प्रश्न पूछा, सर ये कैसे होगा. देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में एक ज़माने में प्रॉब्लम थी कि क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यूथ. खुद के ऊपर हमें विश्वास नहीं था, तो हम दूसरों के लिए कैसे सोच सकते हैं. इसीलिए हम कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग. इंटरव्यूज में जाते हैं, लोग पूछते हैं कि बताओ कहाँ कहाँ काम किया, क्या स्किल सेट है. अरे जब तक मौका ही नहीं मिलेगा, वो प्रूव कैसे करेंगे. तो हमने फ्रेमवर्क को उल्टा किया. वी क्रिएटेड ए फ्रेमवर्क कॉल्ड बिलीविंग इज सीइंग. जब तक आपको विश्वास नहीं है, वो संभव ही नहीं है. पहले विश्वास तो करो, स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्फ. अब बिलीव कॉन्सेप्ट, जैसे भारतीयता की जो ये निर्णय मैंने लिया, वो निर्णय केवल एक प्रोडक्ट खरीदने की नहीं थी, अपने आप को गिवर बनाने की. आई स्टार्टेड माई गिवर्स जर्नी. टेकर से जब हम गिवर, हमारे पास जब कुछ भी नहीं होता है, तब हम देने की मानसिकता रखते हैं, तो हमारे पास सब कुछ प्रकृति बेचती है. ये प्रकृति का नियम है. दिस इज व्हाट जो सिद्धांत दीदी भी बात कर रही है. सो ये गिवर माइंडसेट के लिए बिलीवर माइंडसेट इज वेरी वेरी एसेंशियल. हमें अपने आप पे,
अपने कुशलता पे, अपने समाज के विभिन्न वर्गों के कौशलता के ऊपर हमें वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, हमें वो अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जिनको मिलनी चाहिए, तब वो प्रूव कर पाएंगे। अब ये बिलीव तो मैंने कर लिया, बट हाउ डू आई आइडेंटिफाई मैं कैसे देना है? देन वी क्रिएटेड एन अनदर फ्रेमवर्क, एवरीबडी, सिंगल वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड, एवरीबडी इज गुड एट समथिंग। हम सबको पता है हम किसी न किसी में तो एक चीज में अच्छे हैं। जिस दिन हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि विच इज दैट वन स्मॉल थिंग which we are good at it, that is my giving destination. So if I am good at creating a social enterprise, if I am good at creating a market economy, if I am good at creating, a wealth from waste, or if I am good at sustainability mindset, I can become a giver. तो अगर हम ये स्थापित करते हैं, जो प्रश्न है कि हम इस सब को कैसे, ये सब बाय डिफॉल्ट होता है। अब देखिए चक्र 25 साल में जब लोग कहते थे कि स्वदेशी इज इरेलेवेंट, आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वदेशी बोलो। जब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट में काम करते थे, चाइना प्रोडक्ट्स एंड ऑल नॉट पॉसिबल। तो एक निर्णय लीजिए कि एक ऐसा मार्जिनलाइज कम्युनिटी या सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट को अपना जीवन में लाइए, संकल्प लीजिए, संकल्प से ही सिद्धि संभव होगा। Praveen ji, I think your take. We are running out of time, so I have to really economize on that, please. देखिए, बदलाव के लिए सबसे बड़ी बात है जो सर ने बोला है कि आपका अपने लिए सेल्फ कमिटमेंट। आप अगर अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं, कोई नोटिस करे या बिल्कुल भी नहीं करे, आप उस बदलाव के साथ करे रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देगी। आपकी जहाँ ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई वो होगी अपने आप बाय डिफॉल्ट, ये भगवान आपके साथ रहता है। मैं अपने से ही कनेक्ट करूंगा क्योंकि जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में जी है, मैंने कूड़े को पकड़ा, इससे नीचे तो कुछ नहीं है ना। अभी मैंने कूड़े को भारत में ब्रांड बना दिया, मेरा कूड़ा ब्रांड है, तो कुछ भी हो सकता है फिर। दिस इज माई लास्ट कोट। थैंक यू, वेरी गुड। या दीदी, आई थिंक सर एक छोटी सी चीज, 1 मिनट लूंगा मैं आपका। आप लोग गूगल करेंगे, आप डेंटिस्ट होता था भारत में, साइंटिस्ट है, गायनालॉजिस्ट है, भारत में कभी गार्बेजोलॉजिस्ट नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आई एम द फर्स्ट गार्बेजोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। लोग आपके मोहल्ले में गलियों में कूड़ा गाड़ी आती है, हमने भारत में पहली बार गार्बेज एम्बुलेंस लॉन्च किया। सो अगर आपको, और ये कहाँ से आया? ये आता है दिमाग से। आपके दिमाग में जो चीज आपने सेट कर दी, आप उसको जमीन पे उतार दोगे 100%। थैंक यू। वंडरफुल दीदी, a quick response from you. Yeah. जैसे सर ने अभी बताया कि इसको बिलीव करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिलीव के साथ अपने आप में एक संकल्प होना चाहिए। उसके साथ में इस कॉलेज, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ फ्यूचर बन रहा है भारत का, जहाँ आज का प्रेजेंट है, वो अगर इस चीज़ों को सब्जेक्ट में या सिलेबस में इंक्लूड करके ऐसे सेंसिटाइज और इन चीज़ों के बारे में इन लोगों को रोशनी देंगे, तो ज़रूर हमें विद इन लेस टाइम हम इन सब चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ऐसे एनजीओज और उभर कर आएंगे जब अगर यूथ उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये कॉलेज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक भारत को निर्माण करने में कि वो यूथ के साथ ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करे और उनको उसका पार्ट बनाए। केवल डिस्कशन के साथ हम चाहते रियलिटी में वो एंटरप्रेन्योरशिप को ले। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी है, हमारे पास मार्केटिंग के चांसेस भी है, आपको सर्टिफाइड भी मिलेगा, सब कुछ आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बस आपको जुड़ना है और करना है। थैंक यू दीदी। ओवर टू प्रेरणा। One thing that the point with which you started the session, one social responsibility for every company today is to have impact and to have sustainability in their mindset. Whatever business you're doing, whatever entrepreneurship, innovation you may be doing, in the entire process, like we call this circular economy, not every business can be a circular economy, but at least it should have some elements of sustainability into it if we want to
like we are actually, by destroying the climate, I believe that we are creating our own graveyards. If we want to live in a better planet, and if we want to have a better life, I think whatever work we are doing, we need to include sustainability in that. And sustainability is not a destination. I can be on level A of sustainability. Somebody could be on level, like maybe 10th level of sustainability. It's a journey where once you start thinking mindfully, every choice you make, just have this filter in your mind that is it better for the climate or not. If you have this filter before taking any decision in your life, and I think this is no longer a theory, this climate change, whatever, all these sustainable, this is no longer a terminology. We live in Delhi, and how much pollution we are facing, we all know. And we are actually living in a live gas chamber. Like, I was suffering for 1 month, I was coughing, and I didn't know what happened because of this polluted capital. And I think everybody would have had cough and cold for sure in this last 2-3 months of pollution which we suffered. So climate change is no longer a theoretical concept. Global warming is no longer just in numbers, or it's no longer just a term for some United Nation to follow as per SDG we all are facing in our daily life. And until we start making our choices sustainably, I mean, the impact will not be created. So at the end, like whatever government has its own responsibility, individuals, corporates has its own responsibility, but in our personal choice, if we can bring some change, I think that is the most important part. Yeah, thank you. So, audience, you have heard our speakers, so we are running out of time, so we can take a couple of questions if one has. Please, can a mic be given to them, please? Just introduce yourself briefly and direct your question to who you want to ask. And please be brief and focused. Yeah. Hello. Good evening, everyone. And my question would be from Praveen sir. So, sir, as a social entrepreneur, an entrepreneur see a problem in society. But what if a society is not acting upon that problem? So, I'll give you an example. As in faculty, we are running a sort project in our college, that is segregation of organic waste for recycling and treatment. So basically we, our student team is collecting waste from the college, from college kitchen, and from the society neighborhood, and we are actually preparing manure, the good quality manure. We have also tested the manure and we are selling it. But the point is, when we involve students, to aware the society, the feedback we are getting that they are not even ready to segregate the waste into dry and wet waste. So my question would be that how, we as an entrepreneurs, when we see a problem, how to involve society at a large scale, and how to inculcate values that this is a bigger problem, and only entrepreneurs cannot solve it, because we can, there is need to aware society. See, we have so many signboards that don't litter here and there. We are adults and we need to know that already, but we have to give instructions, right? So my question is specifically that how to involve society at that level. Thank you, sir. थैंक यू. ये जो टोटल हमने मॉडल की बात की थी, ये मॉडल कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल है. कम्युनिटी मतलब वो सोसाइटी जो लोग सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं. हमें यहाँ पे साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी उनकी कि वो सेग्रीगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं. उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके, उनके काउंसलिंग करके, हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को बेबी स्टेप्स में करना चाहिए. पहले आप कंप्लीट सोसाइटी को मत पकड़िए, आप केवल एक टावर को पकड़िए. टावर में पहले शुरू के 10 घर को पकड़िए. ऐसे करके जब आप देखेंगे ना, क्योंकि किसी भी हर व्यक्ति को 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है. जितने भी हॉल में बैठे हैं, या तो उसको पैसा चाहिए होगा, या उसको ग्लैमर चाहिए होगा, या उसको सम्मान चाहिए होगा, रिस्पेक्ट चाहिए होगा कि 4 लोग उसको जाने. तो आपको यही चीज़ें उसको देनी है. अगर उसने सेग्रीगेशन कर दिया तो उसको हाईलाइट कर दो, उसको अमिताभ बच्चन बना दो सोसाइटी का. हमारी पॉलिसी यही है, हम यही करते हैं. जो आदमी सेग्रीगेशन नहीं कर रहा है, एटीट्यूड है, हम उसी को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और उसी को हीरो बना देते हैं.
Simple. Thank you. Thank you. Thank you. So we have time for one last question. Anybody? Oh. Sir, my question is to Praveen sir again. So when we talk about waste management and sustainable entrepreneurship, so how the government or regulatory authority is helping them out? देखिए, ये आप समझ लीजिएगा, जिस लेवल पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 आए थे और अभी 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, ये सारे रूल अगर आप इसको डिकोड करें, ये अवेलेबल है, नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फेवर्स हैं इसमें, फाइनेंशियल फेवर्स हैं, सारी कुछ है। आपको उनको डिकोड करना है और उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, केवल ज़रूरत है उनको अंडरस्टैंड करके एक्सपीरियंस लेने की। आप देखिए, कूड़े का काम सबसे खतरनाक काम है। आप बिना, जैसे अभी मैं शेयर करूंगा कि मेरे अगस्त से लेके अभी तक भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसके आधे लोग मेरे काम को नोटिस कर चुके हैं। 10 मिलियन से ज़्यादा भारत के अंदर लोगों ने मेरे को नोटिस किया है। मेरे पास 3,500 ऐसे बेरोजगार लोगों ने फ़ोन किया है इन अगस्त से लेके अभी तक कि हमारे पास वो इंफ्रा नहीं है सर कि हम वो कॉल अटेंड कर सकें। तो ये वो लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं। तो आप पहले अपने घर से शुरू करिए, उसके बाद अपने 2-3 दोस्तों के साथ करिए। ऐसे करके आप पहले एक्सपीरियंस लीजिएगा, क्योंकि कूड़े का काम खराब काम है। आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ऐसे करना है कि किसी को दिक्कत ना हो। तो आप पहले इसको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। केवल पीपीटी पे गूगल वीडियो से आप अगर कूड़े का काम करने जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। Thank you. Thank you. So what an emphatic answer. So I think it's time for wrap up. Already we have overshot around more than 40 minutes. So my sincere thanks to all the speakers, Mr. Mallikarjun, Praveen ji, Didi, Samiksha Didi and Prerna for joining us. It was a wonderful experience moderating this session, and a big round of applause for the audience. So, and I would like to give a concluding note that if you want to live better, we need a better world, and it's upon us to how do we create it. So the social enterprise, sustainable social enterprises are the answer to the questions probably that have come out of the discussion today. And a big round of applause for the wonderful MCs. They have done a terrific job. Thank you so much. And I really enjoyed my saying. Thank you. Thanks for the time. Over to them. Okay, thank you, sir. Time has now come to felicitate our panelists. I request Professor Dr. Sujata Khandai, ma'am, Director ACCF and Conference Chairperson, to do the honors. Ma'am, please. Starting with Mr. Mallikarjun Latha. Thank you. Next is Mr. Praveen Nayak, sir. I request again, ma'am, to do the honors. Next is Ms. Prerna Prasad. Ma'am, please. Next is Ms. Samiksha Didi. Ma'am, please. And last but not the least, Professor
Professor Dr. Devashri Mukherjee. Sir, please. Thank you. As we approach the conclusion of this enlightening session, I sincerely thank all our distinguished panelists and our respected moderator, Professor Dr. Devashri Mukherjee, for sharing their valuable insights and experiences. On behalf of organizing committee, I extend a heartfelt gratitude to each one of you for being part of this session. Now I request for group photography. Thank you. With this, we are starting with the valedictory right now. okay. So need not to move on. We are straight away starting with the valedictory part of this conference. So just be here. Maintain silence, please. We are about to start. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kasyit dukh bhag bhagavait. May all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, and may no one suffer. On behalf of Amity University, Uttar Pradesh, Amity College of Commerce and Finance, I, Dr. Aviral, along with my co-host, Riya Ghai, extend a very warm and respectful welcome to all esteemed dignitaries, starting with Ms. Chavi Prabhakar, Founder and CEO, Global Indian Solutions, Professor Fulufelo Netswera, Deputy Vice Chancellor, University of Venda, Republic of South Africa, on screen. Sir is on screen. Ms. Prerna Prasad, Founder and CEO, Ecoplower and Curator of Vanbhoj, Mr. Shivkant Singhal, Senior Business Development Manager, ACCA, in-house dignitaries, HOI, colleagues, and researchers. It is my proud privilege to welcome you all to the valedictory ceremony of International Conference on Business Transformation for Sustainable Entrepreneurship and Value Creation, organized by Amity College of Commerce and Finance at Amity University, Uttar Pradesh. Next, I call Director ACCF and Chairperson, Professor Dr. Sujata Kandai ma'am, to welcome our guest with sharing a sapling. Starting with Ms. Prerna Prasad. Next. Ms. Chavi Prabhakar. And next is Mr. Shivkant Singhal. A round of applause for all the dignitaries. Over the past days, this conference has served as a vibrant platform for intellectual exchange, innovative ideas, and meaningful deliberations on sustainable entrepreneurship and value creation. We now begin the valedictory proceedings. Now I request my co-host to begin with the rest of the part of the proceedings. Thank you so much. In this regard, I feel honored to invite our first distinguished guest, Ms. Chavi Prabhakar, CEO, Global Indian Solutions. Ms. Chavi Prabhakar is a senior financial services professional with over 20 years of extensive experience in NRI banking, wealth management, and private banking with prestigious institutions such as Citibank, American Express Bank, Standard Chartered Private Bank, and Axis Bank. She founded Global Indian Solutions, India's first integrated solution provider for global Indians, NRIs.
She also serves as an independent director on the board of Shan Telecom Limited and Globus Power Generation Limited. Ma'am, we are privileged to have you with us. I kindly request you to address the gathering. Over to you. Thank you. Am I audible? Yeah. So good evening, everyone. It's a real pleasure and a privilege to be here and to be invited. I do come, this time I'm coming to MIT University after a gap of probably a year or more. Otherwise, I do keep coming, and it's always, it's so heartening whenever I see, what's happening here, the initiatives that are being taken. And so when I was invited to come here, and sustainable entrepreneurship, entrepreneurship is a term so dear to me, because I became an entrepreneur when it was not the trending word, which was about 10 years back. And as it was just mentioned, I was a career banker. So for 2 decades, I was a banker. And during my term, during the time when I was a banker, I was nurturing certain ideas, thoughts, about what is it, that, and we used to deal with, set of customers, ultra HNIs. I am known as a private banking and wealth management expert, rather a veteran. And through my career, heading a business, setting up businesses, managing large teams, I was actually nurturing the thought and idea of venturing out. Now, at that time, I'm talking, so today I would have completed 30 years as a professional. And so at that time, nurturing this thought itself, was something, even if I would mention to somebody, they would say, oh, what, you are a top banker, what are you talking? And therein is actually this, I would say, the start of a story about a journey that can take you wherever and whichever way you want it to go. And, and today I've come such a long way that, in fact, I am also an academician now, along with being an entrepreneur and an ex-banker. So today I'm teaching, I am a visiting professor at the only women's technical university in Asia, the first one, called Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, run by the Delhi government. And the course I'm taking in this term is entrepreneurship development. And I was invited there to create that bridge between industry and academics. And that's where, that is a true, that sense of, I would say, fulfillment, or, I feel really nice when I'm standing in front of a batch of our MBA students, final year, and talking about entrepreneurship. And when you're talking sustainability, all the time you're saying ESG, ESG. But what is this ESG? Are they simply words? When we are saying, how will we transform? How will we transform entrepreneurship? So first and foremost, we need to have the entrepreneurial spirit within us. And that's something which, I tell students, it can start any time. Don't wait like I waited 20 years into my career to actually, I knew what are the gaps, and entrepreneurship seems so fancy, it's nothing. The simple definition for me is identify gaps in whatever aspect of your life, think of a solution, and make it happen. And implementing that solution is actually the main
piece of the entire puzzle. Make it happen. The resources available today, and I'm seeing, a lot of girls here, the kind of resources being made available, if you will just Google it, you would be amazed. You will be nurtured from ground zero onwards, and nothing stops you from becoming a unicorn. India being the third largest, sometimes it's said fourth or third, I think it's the third largest hub of startups in the world. We in Delhi NCR are sitting at probably the largest hub of entrepreneurs. Or the startup industry is so vibrant, but we will make it happen. And all of us are seeing visible signs of, we are today itself, it seems as if summer has come, and we are in mid-February. So climate change and other aspects of, the social angle to what we are today, as I would say, we all are social beings, and we all are, proud to be citizens of one of the largest economies in the world. So what is it that we are going to contribute therein? And now the solution, as I said, gap and solution. Simple. So what is the gap? We all are talking circular economy, we are talking sustainability, we are talking all these words. Net zero. Now it sounds so nice, net zero. Have we ever tried to find out what is net zero? And therein is the, I would say, ideas waiting to be acted on. I was just hearing a last part of the panel. It's so simple. We make it so complicated. Entrepreneurship. Ma'am, please explain. Like when I went for my first, I said, why? Entrepreneurship is nothing. It's just your initiative to take on something which has been a challenge. And how will that happen? We have to do it ethically. We have to do it. We need innovation. So innovativeness means and not just innovation. We need, a word which I really love, which is called costivation. I came across this word, and I just love it. Why? Cost-effective innovation. Innovation can be huge. We all are trying, it's not a rocket science. Innovation can be so simple, and the effect and impact of it could be disruptive. We have seen it all. I don't have the time. I don't want to take that much of time. And transformation comes from leadership. Now that's a favorite topic with me. I am a visiting faculty at Indian Institute of Banking and Finance also. And I go and I actually, address very senior bankers. It's my thing. I want to remain connected with my banking fraternity. And what are they talking? Everyone's talking. So the last session I did was on ethical banking. And this word ethics, leadership. I keep on doing a lot of leadership talks. What is leadership? Leadership is not when I will have a team of 400 people. That's the day I become a leader. Not at all. That's a completely wrong definition. Leadership is me, being invited here, and I coming here because I wanted to be a part of something so wonderful that's happening at
Amity University and the department, the initiative. And here I am. And here I am, and I hope, some impact obviously I am going to be impacted by it, and so will others be. So leadership, ethical leadership is again the beginning point, and leadership does not mean being the MD and CEO of an organization, and only then you become a leader. It's all of us are leaders, and I never believe in that born leader philosophy. So all of us can nurture our spirit to make a difference and a positive impact in society, and that's where sustainability and all these words all fall into place. And transformative leaders we keep hearing of. Again, did they set out to become transformative leaders? No. They created that impact which was transformative. And therefore, as I always like to say, that we all are chasing success, we are chasing wealth, we are chasing prosperity. From where all is that going to come? Because it's not a straight route. It's about us creating win-win situations for all of us so that we all can coexist and create a world going forward where, we are already living in the disruptive AI you all are the, the generation, where the disruption is maximum. And you all therefore have the tools, you are empowered. You are empowered with technology, you are empowered with, I would say the vision, because you all are exposed to so much of knowledge and information which is available, which actually is a tool which was missing maybe at, I come from a very different generation. So I'll only end by saying, please do not wait for things to happen. Simply make it happen, and make it happen today. It may take you some time. You have your career, the journey, I think I am into my 4th career, in that space of 30 years, and so can any one of us here. So all the best. I'm waiting for a lot of things to happen from here. You all have a hub here. Amity is known for its, the startup hub and the amount of, support that comes from here. And I will request every one of you to do Google and see what are the initiatives and what are the opportunities and benefits available to each one of you. And avail all the benefits available and be a success in whatever you do. And a win-win situation is what the world needs. So all the best. And thank you for inviting me here. Thank you so much, ma'am, for wonderfully explaining the real meaning and facts related to entrepreneurship themes and strategic words of wisdom. Thank you so much. Next, it is my honor to invite on screen Professor Fulufelo Netswera, Deputy Vice Chancellor, University of Venda, South Africa. Professor Netswera serves as the Deputy Vice Chancellor for Research and Postgraduate Studies at University of Venda. Previously, he was the Executive Dean of the Faculty of Management Sciences at Durban University of Technology. He established the BRICS Research Institute, the Durban University of Technology Business School, and the African Food Festival. Sir, we are deeply honored by your presence. May I request you to kindly share your valuable thoughts. Sir, please. Thank you very much. Namaste. Greetings to all of you at Amity University, professors, students, and the leadership of the university. It is a great pleasure for me to speak to colleagues from another BRICS country, this time India, one of my favorite countries.
and I hope to see some of you soon. My talk, I must say, is inspired by conversations I've had recently with a colleague, Riaz Tayob. He's a Marxist scholar and also a scholar of the Southern and Eastern Trade Institute. I was given an opportunity to speak freehand, to choose what I want to talk about and to express myself fully. So I will talk a little bit about BRICS and not necessarily entrepreneurship, even though entrepreneurship is the main theme of the day. So allow me to talk, and hopefully you will find connections and you will enjoy my talk. So I really want to bounce a few ideas about global economy, specifically the global political economy with reference to multilateral institutions. As most of you might know by now, India is credited with the initiation of the establishment of the new development bank, specifically your former Prime Minister Manmohan Singh. Before then, it had become untenable for countries of the global south, as we collectively call them third world countries then, to continue borrowing from the Bretton Woods institution, specifically the World Bank and the IMF. The World Bank as its sister organizations and its sister organization, the IMF and the WTO, we must understand were not established to support fledgling economies of the third world countries. This is an important point, I must say, especially coming from the third world countries, because these institutions were established following the First and Second World War in Europe, where countries of the global north nearly destroyed each other. And in the aftermath of those conflicts, after their economies had been decimated, and when they sat in Bretton Woods in the USA, they agreed we should establish a bank of reconstruction and development, named it World Bank. So that bank was not meant to support the economies of the third world countries. But subsequently, the establishment of the Reconstruction and Development Bank, the World Bank, was also geared towards fighting poverty and support development, both financially and through technical expertise in Europe. And it managed to do that to some extent. The World Bank later on extended loans, a lot of loans, to European countries. Some of these countries could be characterized as failed economies. You will remember the economy of Greece was battling greatly to make it after World War I. So following the Marshall Plan, some of the American loans were extended to European countries, and even later on converted to aid and grants. It was impossible that some of those countries will be able to repay the loans from the USA. It was also revealed that for Europe to retain its financial standing, further loans would have to be extended to it beyond the original loans that were granted by the World Bank, expanding
the debt that these countries hold against the USA and specifically against the World Bank. We must understand that the World Bank was merely dispersing loans that originally could have been extended by the USA itself. Hence, some of the biggest debtor nations today are indeed European countries. If you were to look at the debt ratio, the biggest debt ratio, which currently are Japan, sitting at 230% of their GDP, Singapore, Greece, Italy, among some of the countries with the biggest debt ratios. Now, it has a lot of implications, what I just spoke about. Can we continue to characterize some of these countries as first world countries? Will they be able to repay their loans? Possibly not, probably not. So these are not necessarily rich countries. If these data ratios were attributable to third world countries, I would assume that by now a lot of them would have been in serious trouble compared to those countries in Europe. So what is happening between the World Bank and the European countries can indeed be characterized as a Ponzi scheme. We will extend loans perpetually and forever for as long as you can continue to start paying as little as you possibly can. We must understand as well that countries like Greece, Italy, and those that I've just mentioned are European countries. They are not countries of the global south. And we must ask ourselves a very important question. If these debts were held by countries of the global south, what would happen to them? But the World Bank's experiment of extending loans to the European countries was extended through those loans, so through those lessons, was extended to countries of the third world later on. Originally, the bank was not intended for us, but later on, through lessons, the loans were extended to us. And what the World Bank learned quickly was that they can replenish their coffers by exorbitant interest rates, which they will charge the poorer countries of Africa, Latin America, and Southeast Asia. We shall therefore not delve into the explanations of the structural adjustment program. Some of you might be aware of that, which are programs of the IMF that were... Sorry to interrupt, sir. Excuse me. Request you to please wind up your proceedings. Yes. Okay. Now, as I wind down, let me say the following. I think the genius of your former Prime Minister should therefore be acknowledged, for it was through him that the NDB was established in 2015. Realizing that India has got to enter a path of development, he looked around and decided he will not be going to the World Bank for loans. Instead, he looked to the east and saw that China already had huge foreign reserves, but he didn't want to borrow directly from China. Instead, through conversations that were already happening between India, China, Brazil, and Russia, he decided, let's establish the new development bank. This bank was a catalyst to reconstruction and development in the global south. It is not a fully fledged bank of the size of the World Bank, but what it does currently is enormous.
and does, in a way, displace economic affairs. What followed it, which is equally very fulfilling, is that in 2015 in Brazil, when the leaders met, the BRICS leaders met, they decided to establish the contingency reserve currency, a financial institution or instrument that would equally also displace the IMF. Now, I think, given that I don't have enough time to talk, I wanted to link this to the performance of national economies and to entrepreneurship itself, because these are very important macroeconomic principles that determine how nations perform locally and in relation to international economies. Let me just stop this talk here. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your enriching address and global perspectives. Due to constraint of time, we couldn't allow you much. Thank you so much for your joining. We now move to the conference report presentation. I invite Dr. Pallavi Tyagi, ACCF, Amity University, to present the comprehensive report for ICCACF 2026. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ria, for inviting me. So, respected dignitaries, guests, my dear students, research scholars, and colleagues, it is my privilege to present this report on behalf of my team, ICACCF 2026. So, the ICACCF 2026 is quite an umbrella term, and during the course of last 3 years, we have organized number of events under this umbrella. So the conference journey began on 9th of February with 2 enriching pre-conference workshops organized by our knowledge partners, Middlesex University, Dubai, and Goldsmith University of London. So the first pre-conference workshop was led by Professor Ivan Zupik on the session Theory Development, offering deep insights into building a strong theoretical foundations and enriching research impact. This was followed by Associate Professor Linda Hyland. She is with us today, and from Middlesex University, Dubai. And thank you so much, Rashita, for moderating the session. The objective of the workshop was highlighting the evolving role of artificial intelligence and qualitative research, and topic was qualitative research in the age of AI. The session set the tone for the conference. Both sessions set the tone for conference, and the day also involved one poster presentation from our MCOM students, effectively judged by Rashita and Professor Ivan Zupik. The formal inaugural of the conference took place on 10th of February with the invocation and the lighting of lamp. We honored by the presence of eminent dignitaries from Amity and outside Amity. We have also a representative from ACA. Today also we have a representative of ACA. ACCA is a conference partner. For the last 3 conferences, we are receiving continuous support from ACCA. And an online workshop by Professor Mate Cern on publishing quality research further enriched the academic endeavor for the day. So day 2, which is today, continued with the themes including AI and innovation in the business, sustainable marketing, sustainable finance, social entrepreneurship. And I forgot to mention day 1, we had 5 tracks. So 2 sustainable finance tracks. We are having 7 and 5 papers in each track. We have 1 sustainable HR track, which has the highest number of papers, 9. We also have 1 sustainable marketing track. As Chavi ma'am mentioned, we also have 1 ESG track in the on the day 1 of the conference. On day 2, today, we have sustainable finance, social entrepreneurship, AI, these following tracks we have today. The major highlight for today, which was moderated by Dr. Debashi, so was the panel discussion, Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship, which effectively connected academic insight with the practical realities. Across the 2 days, more than 70 papers has been presented, which also involved the poster presentations presented by our UG and PG students across Delhi NCR. We have received more than 70 papers from international collaborators and national collaborators. We have received the papers from Dubai, London, Morocco, and nationally from Jharkhand, Uttarakhand, Kerala, Gujarat, to name a few.
Participants joined us from universities like University of Delhi, Jamia Millia Islamia, Goldsmith University of London, Middlesex University Dubai, Symbiosis University Noida, Nirma University Gujarat. ICACCF 2026 has truly been confluence of ideas dedicated to sustainable transformation and responsible value creation. Thank you so much for joining us, and hopefully we'll continue our collaboration in the upcoming editions. This was the third one, so hope to see you all again in the fourth edition of the conference. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Pallavi Tyagi ma'am, for presenting such a detailed overview of conference proceedings and the achievements. Next, we would like to invite our guest, Ms. Prerna Prasad. Ma'am, if you would like to speak and address the gathering over something. Over to you. I already shared what EcoFlow does. Just a small example of what we are doing at One Bhoj, a practical example of sustainable living within Delhi NCR. So it's a 30-year-old mud house located at Surajkund, Faridabad, surrounded by high-rise apartments and concrete buildings. And the entire house, 80% of the construction material has been taken from the campus. So it is made out of mud taken from the campus and stone also taken from the campus. We have almost like 1.8 acre land, and it was a mining quarry which has been converted to a forest where they created small water bodies which brought back the birds and the wildlife. And you won't believe that in that small forest we have woodpeckers, hornbills, nilgai, mongoose, porcupine, sunbirds, hummingbirds, fireflies, owls, and a lot of wildlife in just a small area. And we follow grey water treatment, we have rainwater harvesting, we do composting, we do waste segregation. It's just for the electricity that we are dependent on the grid. Rest, everything is self-sustainable. And you're invited to come there. When you come there, you'll feel the difference in the air from the city and at One Bhoj. Thank you. Thank you so much, ma'am, for bringing into light such valuable contributions. Now comes one of the most awaited moments, the Best Paper Award declaration. To announce the Best Paper Award, I invite Dr. Harpunit Singh Kohli, Assistant Professor, Amity College of Commerce and Finance. Sir, please. Thank you so much, sir. For the best papers, we have two categories. One is best paper track-wise, and one is the best paper conference best paper overall. Yeah, ma'am, so for that, I would like to invite Mr. Shivkant Singhal sir to the stage, because the prizes are being sponsored by ACCA, like always. So, sir, I would also like to invite Dr. Sujata ma'am, please, on the stage, and other dignitaries. Pallavi ma'am, please. Shavi ma'am, Prerna ma'am, please, on the stage. Sir, we can come in the center, please, if you can. Pallavi ma'am, please. So the first track was Sustainable Finance. The Best Paper Award goes to Dr. Nisha Goel. Dr. Nisha is from SPM College for Women, University of Delhi. Her paper was titled Mobilizing Green Finance While Managing Climate Finance Risk in India. Congratulations, Dr. Nisha Goel. The second track was Sustainable Marketing. The Best Paper Award goes to Mohammad Faiz Kamar. Mohammad Faiz is from Jamia Millia Islamia, and the paper title was A Prisma-Based Systematic Literature Review on User-Generated Content and Consumer Behavior. Congratulations. The third track is Sustainable HR, and the Best Paper Award goes to Dr. Aarti Sehgal. She's from Rukmani Devi Institute of Advanced Studies. I guess she's not here. She's not here. The paper was titled Exploring Thriving at Works as a Dynamic Moderator Between HRM Practices and Job Satisfaction for Persons with Disabilities. Ma'am is not available in person, so we'll move on to the next one, which is ESG Integration for Sustainable Growth. The best paper goes to our guest, Ms. Rashida Puthia from Middlesex University, Dubai. The paper is co-authored with Aminat Homa and Dr. Sudeepa Majumdar, and the paper was titled The Effectiveness of Pijovian Tax to Combat Climate Change, the Case of the Maldives. Congratulations, ma'am.
The next track is AI and Sustainability. The best paper goes to Mr. Rakesh Mehta. He's from Astral Education. And Sir is also not available in person with us. The paper was titled AI-Enabled Value Creation, a Strategic Framework for Sustainable Supply Chain Governance and ESG Compliance. Moving to the next one, Social Entrepreneurship. The best paper goes to Kumar Shantanu from ICACCF. The paper was titled Backing, Bargains and Barriers, a Multiple Case Qualitative Analysis of Women Entrepreneurs in North India. Congratulations. We now move on to the poster presentation, which was for our PG and UG students. So the best poster goes to the first prize, rather we have two prizes here. The first one goes to Ms. Resham Agarwal and Ms. Aishwarya Kern from New Delhi Institute of Management. The prize is for 2,500 rupees. May I request you to please join us on the stage? Students made a poster on AI in campus recruitment, understanding applicant attitudes towards AI-driven hiring processes. Ms. Resham Agarwal and Ms. Aishwarya Khan. The second prize for the poster presentation goes to Ms. Kanishka Chauhan of ACCF. She presented a poster on ESG performance and firm outcome in India, evidence from large cap, mid cap and small cap firms. In this edition of ICACCF 2026, we have two overall best conference papers, which are being shared by Ms. Ikra Tabassum from Jamia Millia and Ms. Riya Ghai from ACCF. So the overall prize of 15,000 is going to be distributed amongst these two. Ikra presented her paper on AI recommender system and consumer behavior, whereas Ms. Riya Ghai presented her paper on scale development for performance and sustainability of microfinance self-help groups in India. Congratulations to all the winners, and may I request all the dignitaries to please have their seats. Thank you. Thank you, sir, and congratulations once again to all the awardees for their outstanding research contributions. Time has now come to felicitate our esteemed guests. I request Director ACCF and Chairperson Conference to do the honors. Ma'am, please. Starting with Ms. Chavi Prabhakar. Ma'am, please. Next is Mr. Shivkan Singhal. Sir, please.
Okay, thank you. Okay, as we approach the conclusion of this memorable academic journey, I invite Dr. Rishi Taparia, ICACCF Amity University, to deliver the vote of thanks. Sir, please. Thank you, Viral. Good evening, everyone. On behalf of Amity College of Commerce and Finance, Amity University, Noida campus, it is with profound gratitude and joy that I extend my heartfelt thanks to all who have contributed to the success of this two-day international conference. First and foremost, I express our deepest appreciation to our Honorable Founder President, Dr. Ashok K. Chauhan, for his visionary leadership and steadfast commitment to excellence. Sir, your unwavering support and blessings have been the cornerstone of this conference's success, inspiring us to aim higher every step of the way. I would also like to thank our esteemed Chancellor, Dr. Atul Chauhanji, for his dedication to fostering academic innovation, excellence, and community engagement. Sir, your vision and guidance continue to motivate and propel us towards achieving new milestones. On behalf of ICACCF, I extend our sincere gratitude to Vice Chancellor, Ma'am, Dr. Balwinder Shukla, our esteemed Vice Chancellor, Ma'am. Your continuous support and insightful guidance has played an instrumental role in ensuring the trump of this event. We are truly fortunate to have your leadership illuminating our path. A special thank you to Dr. Sujata Khande, Director, ICACCF and Chairperson of ICACCF 2026. Ma'am, your tireless efforts, meticulous planning, and inspirational leadership have been pivotal to the success of this conference. Your dedication is a source of strength and guidance for all of us. I would also like to acknowledge the invaluable contributions of Dr. Gurinder Singh, Group Vice Chancellor, Amity University, and Dr. Sanjeev Bansal, Additional Pro VC, Amity University. Sir, your steadfast encouragement and support have greatly enriched this conference and inspired us all. We are proud to acknowledge the ICACCF 2026. It was organized in collaboration with ACCA India, whose continued collaboration strengthens our shared commitment to advancing ethical leadership, sustainability, and global standards in business and finance education. A special note of gratitude to our esteemed knowledge partners, Middlesex University, Dubai, and Goldsmiths University of London. Your academic collaboration, global perspective, and research excellence have enhanced the intellectual depth and international stature of this conference. We would also like to place on record our sincere appreciation to our sponsors and sustainability partners, Indian Oil, Chal Charkha, Paper Nest, and Eco Tusser. Your generous support and commitment to responsible growth and sustainable development have significantly strengthened this conference. Your association reflects the powerful synergy between academia, industry, and social enterprises in driving meaningful impact. A heartfelt thanks also go to the esteemed dignitaries and industry leaders from Conserve India, FITSOL, Climate Policy Initiative, Quality Austria Central Asia, Accenture, AM Strat Consult, Gayatri Electric, Garbage Clinic, EcoPlore, Chal Charkha, Inclusive Divyanjan and Entrepreneur Association, Global India Solutions, and many more. Your shared expertise and insights have elevated this conference to a higher level of learning and collaboration. To our distinguished academicians from premier institutions such as the Goldsmiths University of London, Middlesex University, Dubai, University of Ljubljana, University of Southampton, Malaysia, University of Khor Fakkan, Sharjah, University of Venda, South Africa, IIFT New Delhi, NDIM New Delhi, Linköping University, Sweden, SOIL Gurgaon, Global Risk Management Institute, University of Delhi, Jamia Millia Islamia, and others. Your dedication to advancing research and knowledge has been the backbone of this conference. Your contributions have fostered vibrant discussions and enriched all attendees. We, the organizing committee, extend our sincere appreciation to our colleagues who work tirelessly behind the success, behind the scenes,
contributing their time and expertise to ensure the seamless organization of this event. Your commitment to excellence has been pivotal in creating a positive and conducive atmosphere for meaningful interactions. We would also like to express our gratitude to the dedicated academic administrative staff and Karan and both Ramesh Bhaiya especially, your hard work and dedication from logistical arrangements to every small thing have not gone unnoticed. Your efforts have been fundamental in ensuring the smooth execution of this event. A special acknowledgement goes to the University Administration, IT Department and Accounts Department for their steadfast support and commitment to fostering an environment that encourages academic exchange. I know it is a bit lengthy, but I have to thank everyone. Your diligence has contributed significantly to the success of this conference. Lastly, we express our deepest gratitude to our outstanding students, the heart and the soul of this gathering. Your active participation, thought-provoking contributions, and infectious enthusiasm has been the driving force behind the success of this conference. As we conclude this 8th International Conference, let us carry forward the spirit of collaboration and excellence that has defined this gathering. Each one of you has played a vital role in making this event a great success, and for that, we all are truly grateful. I would like to close by saying that let us not just discuss sustainability, let us become its ambassadors in action. Thank you all once again. Thank you. Now I request all the awardees to please come forward for the group photography. Please come forward on stage, all the awardees. Now I request everyone to please rise for national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. With this, we come to the formal conclusion of International Conference. Thank you all for your gracious presence. Jai Hind once again.